Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़ाई परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रु तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज आम नुआ यूनिट स्टार्ट करिबा रियल गैसेस। सो बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस आम देखा आज टॉपिक रे। देख आम जो आइडियल गैस बा परफेक्ट गैस कथा कहूँ तार जो इक्वेशन ऑफ स्टेट थिला ताकू थ्योरेटिकली डेराइव करा जायथिला फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सपोज आम एन मोल ऑफ आइडियल गैस नेला ताले इक्वेशन ऑफ स्टेट होउथिला पी भी इक्वल टू एन आर टी। किंतु ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट अच्छी इट डज नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ रियल गैसेस विथ कंप्लीट एक्यूरेसी। ओके, रियल गैस पाई एटा पूरा पूरी एक्यूरेटली एटा एग्रीमेंट रे आसे नहीं। ओके, सो ये जो रियल गैस पाई कौन हुए एट लो प्रेशर और एट एवरी हाई टेम्परेचर एक्चुअली रियल गैस ओबे करे ये जो आइडियल बिहेवियर को माने ये जो इक्वेशन को। ओके, ये इक्वेशन रे आमे देखुछु जे एज टेम्परेचर इज टेंडिंग टू अप्रोच द जीरो वैल्यू ताले प्रेशर विल आल्सो अप्रोच टू जीरो बिकॉज एटी आरएचएस टा जीरो ही जाउची। तेणु वॉल्यूम टा जदि आमे कांस्टेंट रखुछु ताले प्रेशर टा निहाती भाव रे जीरो को अप्रोच करिवो। आल्सो जदि उल्टा करिवा प्रेशर को जदि आमे कांस्टेंट रखिबा देन वॉल्यूम विल अप्रोच टू जीरो when the temperature approaches to zero in this case. Since we cannot have negative values for the volume or pressure, okay, volume और pressure केबे भी negative हेई परिबो नाही, तेणु the lowest possible value for the temperature is obviously 0 Kelvin. ओके, ऊपर जो इक्वेशन P v equal to nRT सेठु आमे जानिबा को पाउछु जे T रो वैल्यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर रो मिनिमम वैल्यू 0 केल्विन ही हेबो, नेगेटिव हेई परिबो नहीं बिकॉज प्रेशर आउ वॉल्यूम केबे भी नेगेटिव हेई परिबो नहीं। सो दुईटा इंपोर्टेंट एजम्पशन एक्चुअली निया गला फॉर कंसीडरेशन व्हाइल डेराइविंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट। नंबर 1, the volume which is occupied by the gaseous molecules is negligibly small as compared to the total volume of the gas. Okay, जो तुमर गैसियस मॉलिक्यूल गुड़ा अच्छी तार वॉल्यूम टाकू आमे बहुत ही नेग्लिजिबल बहुत ही छोट बोली कि कंपेयर करिबा as compared to the total volume of the gas. That means the molecules in the gas are negligibly small in size and you can take them to be having point size object. Okay, number 2, the forces of attraction between the gaseous molecules are taken to be negligible. Okay, that means the molecules of the gas will possess only kinetic energy and no potential energy due to the intermolecular attraction. Okay, because forces of attraction को भी हमें negligible नहीं जाइछु। ठीक अछि। अच्छा, ये जो दुईटा assumption बा postulate हमें नेला in the kinetic theory of gases, actually these are only approximate and very nearly hold in case of extremely rarefied gases only. Okay, that is rarefied gases माने for those gases when pressure is very small. Okay, now under the condition of very high pressure the volume which is occupied by the molecules will no longer be negligible. High pressure रे आउ volume को हमें negligible बोली कि नहीं परिबा नहीं as compared to the total volume of the gas. ओके, ऊपर जो हमें assumption देखुथिला सिमिलरली उल्टा जिंस जदि हमें हाई प्रेशर बा लो टेम्परेचर नौचु ताले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो अच्छी दीज आर एप्रिशिएबल
and cannot be ignored. Second point टाको ये काटिला. So it is necessary to apply suitable corrections or modification to the above ideal gas equation in order to make it applicable for the case of these real gases. Okay, so ଏଇ ଭଳିଆ ବହୁତ କିଛି equation को derive କରିକି ତାକୁ predict କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା. Okay, relation ଟା ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ pressure, volume ଆଉ temperature ଭିତରେ relationship in case of real gases. Okay, and some of these equations are purely empirical or semi-empirical, while others are derived from the assumptions regarding the molecular properties. Okay, so the equation actually contains some constant which are characteristics of the gases which are concerned, and some of these equation of states for the case of real gases are given below. Number one, it is the famous van der Waals gas equation. Okay, एटार derivation भी आपको देखिबा हमें. So this one is P plus A by V square into V minus B equal to RT. एठी A और B हेगला constants. Then आ गोटे equation देखो डाइटियरिसी equation. Okay, এটা হচ্ছে P into V minus B equal to RT. Then there is an exponential to the power minus A by RTV. तापरे आसुची Berthelot's equation P plus A by T V square equal to into V minus B equal to RT. Okay, तापरे आ गोटे equation 4 नंबर रे Clausius equation. एटी कहूची P plus A by T into V plus C whole square into V minus B equal to RT. Then Camerling-Onnes equation solid state physics रे भी आंकर बहुत अवदान अछि. So ये कहले गोटे series solution भलिया PV equal to A plus BP plus CP square plus DP cube. এই ভলিয়া solution series हिसाब रे चलला. Okay, A B C D constant नहीं गले. तापरे आछि Redlich-Nong equation P equal to RT by V minus B minus A by T to the power half V into V plus B. So एते सब जो equation हमें 6टा देखिला out of these actually देखा गला जो van der Waals equation, तापरे Berthelot, Diotirisi equation of state are of limited accuracy. Okay, तारो accuracy टा actually limited किछिरा certain limit भीतर ही रहउची, whereas Redlich-Nong equation टा भलो result देखेला at high pressure and it is providing accurate results जोटा experimental संगरे ई theoretical result खाप खाइला. Okay, for temperature above the critical value. तापरे आसिले साहा-बोस equation. Okay, मेघनाथ साहा आउ SN बोस भारतीय वैज्ञानिक तांको नारे equation of state which is given below. Also it has limited accuracy. यारो value टा हला P equal to minus RT by 2B, then exponential minus A by RTV, then log base E V minus 2B by V. Okay, ये जो equation of state actually it is very accurate for densities which are less than 0.8 times the critical density. Okay, तापरे देखो आ गोटे equation आसिला Beatty-Bridgman equation which is another more widely used equation of state. आ यारो भी भलो accuracy आसिला. It is given by P equal to RT into 1 minus E by V square into V plus B minus A by V square. Okay, it is constants रो ए भलिया value अछि. Okay, and this is the value of E. Actually एटा E जो नोची एटा exponential नो, I think it is C by VT cube नीची. Okay, and this equation contains 5 constants A0, B0, A, B and C. Okay, which can be determined experimentally for each gas. Okay, so this Beatty-Bridgman equation does not give proper result in case of critical point region. Okay, so एबे देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जोड़ा थिला dq equal to du plus dw or du plus pdv. We know that this internal energy in case of a real gas does not change during free expansion.
ओके फ्रीली जदि गोटे गैस एक्सपांड करुच्ची ताले इंटरनल एनर्जी किसी भी चेंज हेबो नहीं. So in general this internal energy u of a real gas is a function of any two of the coordinates, may be pressure ही पारे, वॉल्यूम ही पारे, टेम्परेचर ही पारे, এই তিনটা ভিতରୁ যে কোনोसी দুইটার फंक्शन ही गला. सपोज आमे लेखिला u is a function of temperature and volume, ताले याकू जदि आमे डिफरेंशिएट करिबा using the partial derivative du रो वैल्यू एतिकी आसीबो. अच्छा now in case of isothermal process आमे जानिछु टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तेणु dt रो वैल्यू 0 ही गला. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. सो हमर एठी रिजल्ट आसिला केते देखो एठी del u by del v at constant t equal to 0 आसिला काहे कि बिकॉज आ गोटे जिंस आइसोथर्मल प्रोसेस रे du रो वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी यार वैल्यू मध्ये 0 आसे तेणु दिस क्वांटिटी LHS becomes 0. ओके सो LHS 0 ही गला. एठी फर्स्ट टर्मटा 0 ही गला ता माने एई टर्मटा निहाती भाबरे 0 हबो किंतु dv तो 0 ही परिबनी तेणु करी एई जो del u by del v at constant t अछि this must be equal to 0. That is the internal energy u must be independent of volume. Okay acha now let us say the internal energy is a function of temperature and pressure. ताले मध्य अगेन आमे डिफरेंशिएट करिकि एतिकी रिजल्ट पाइला. अगेन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस dt और du रो वैल्यू 0 पुट कर देले हमर वैल्यू केते आसिला del u by del p at constant temperature is equal to 0. That means internal energy should be independent of pressure. Okay hence we can conclude that if no change of temperature takes place माने temperature जदि constant रहउची in a free expansion of gas then the internal energy u is independent of the volume and pressure. That is u is only a function of temperature. Okay अच्छा so ये हला तमरो behavior of real gases यार brief study हमें देखिला. एबे देखिबा deviation from the ideal gas equation. तो प्रथमे आसिला deviation from the Boyle's law. Boyle's law कहूची the product PV should be equal to constant in case of this ideal gas. Okay देखो ये जो deviation होउची कहार होउची real gas रो होउची. Okay Boyle's law रो. Okay it can be studied from the plot. We have taken PV on the y axis और pressure को हमें नीचू x axis रे. Okay so as you can see ये जो dotted line टा देखुचो एटा होची PV equal to constant जोटा कि बॉयल्स लॉ को ओबे करूची आइडियल गैस. ओके किंतु एई ग्राफ रु देखो हमें एठी चारि प्रकार रियल गैस नीचू He H2 CH4 CO माने हीलियम हाइड्रोजन मीथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड. ओके सो ए जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन जेमती कहले आइडियल गैस को देखौची व्हिच इज ओबेइंग बॉयल्स लॉ. हाउएवर फॉर द गैसेस लाइक कार्बन मोनोक्साइड मीथेन इनिशियली देखो एटी कार्बन मोनोक्साइड आउ मीथेन को जदि आमे देखिबा दिस वन एंड मीथेन इज दिस वन. सो इनिशियली कोन देखा जाउची कार्बन मोनोक्साइड आउ मीथेन रे एटा एट लो प्रेशर. ओके प्रेशर जते बेले कम अछि ताले PV रो वैल्यू डिक्रीज करूची. ओके देन with the increase of pressure after attaining a critical value ଗୋଟେ minimum critical value सेतिकी वैल्यू अटेन करला परे ए जो PV प्रोडक्ट पुनी इंक्रीज करी जाउची आकु. ओके लिनियरली इट इज इंक्रीजिंग विथ द राइज ऑफ प्रेशर. अच्छा हाइड्रोजन आउ हीलियम क्षेत्र रे कोन होउची एट 273 डिग्री केल्विन they are less compressible at all pressure than that of the ideal gas. ओके तापर सेकंड जो डेविएशन होउची एटा होउची इफेक्ट ऑफ temperature on the deviation from ideal behavior. Okay so एठी again figure गोटे एठी देखो आमे पुणी PV आउ P को नीचू हला एबे आमे डिफरेंट टेम्परेचर नबा. ओके T1 T2 T3 T4. ओके अच्छा एठी फिगर रे देखो गोटे डिप आमे देखिया को पाउचो इन द कर्व ए बला प्रथमे कमुची पुणी आकु जेकी बढ़ुची राइज करूची. ओके सो this dip becomes smaller and smaller
as the temperature is increased. ओके एठी इंक्रीजिंग ऑर्डर केमती अछि ना T4 होची सबुठी छोटो तापरे T3 तापरे T2 तापरे T1 हैला सबुठू बड़ सो टेम्परेचर आमे जेमती जेमती इंक्रीज करूछु हैला फॉर द हाईएस्ट टेम्परेचर T1 एठी ए जो डिप ता कमी कमी जाउची ओके so at the higher temperature T1 the curve is initially horizontal eta pakha pakhi horizontal अछि माने parallel to this x-axis and obeying the Boyle's law and this temperature is called your Boyle temperature or Boyle point. Okay, the value of PV first decreases below the boil temperature and then increases as the pressure is increased. तापर third one है deviation from Charles law. Charles law कहूची कौन the ratio V by T should be equal to constant. So देखो the coefficient of increase in volume for all ideal gases should be 1 by 273. Okay, so वॉल्यूम जो हिसाब रे इंक्रीज करिवो तार कोफिशिएंट प्रत्येक आइडियल गैस पई ए रेशियो 1/273 हेबा कथा एट ऑल प्रेशर इफ it is obeying Charles law. Okay, actually this happens only at low pressure. Okay, with the increase of pressure kon habo the deviation from the ideal behavior starts. Okay, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ବଢ଼ି ଯିବ ତାହେଲେ ଆଇଡିଆଲ ବିହେଭିୟରରୁ ପୁଣି ଡେଭିଏଟ୍ କରି କରି ଯିବ ରିଏଲ ଗ୍ୟାସଟା and more easily liquefiable gases जो gases को हमें liquefy करिपरिबा they observe larger deviation. Okay, then the last one deviation from Avogadro's law. Avogadro's law कहूची the ratio V by N is equal to constant. एटी small n ହେଇगला तमरो जो moles by amount of your substance. So Avogadro's law is also obeyed when the pressure is very low and hence the volume which is occupied by 1 mole of real gas is not always the same for all gases. Okay, गोटे real gas 1 mole रो आमे नै जाइछु से जति की वॉल्यूम ऑक्युपाई करिवो सो एटा समान रहिबोनी ओके all gases पाई अलगा अलगा गैस रो अलगा अलगा वॉल्यूम हेई पारे and the maximum deviation from the ideal condition are observed more for easily liquefiable gas जेमति हमें इठी ऊपर भी देखिला such as ammonia and methyl chloride. Okay, so this is all about your behavior of real gases and their deviation from the ideal gas equation. Thank you.